हेलो हेलो। हेलो हेलो। Hey, hi Vikas, welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय भैया, आपका इंतज़ार था। ओके, आई एम बैक राइट नाउ बिकॉज आज पूरा मीटिंग्स ही थे बहुत सारा, तो जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया था। और इवन दो 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसीलिए भी उनसे मीटिंग करना था कि आप लोग कितना काम दोगे, क्या दोगे एंड ऑल दैट थिंग। तो इसीलिए थोड़ा मीटिंग लंबा चल गया। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? टेंट, आई होप साउंड आ रहा है राइट। हेलो हेलो हेलो, हाँ साउंड इज ओके। चलो साउंड ठीक है। ओके, राइट नाउ लेट्स जस्ट अ मिनट। इसमें कुछ आया क्या? ओके, दिस वन। ओके, या दो मैसेजेस हैं फ्रॉम विकास, लाइक मीटिंग में क्या होता है। और हाँ भी आ रहा, आई थिंक साउंड आ रहा है, दैट्स थैंक यू फॉर दैट। एंड मीटिंग में क्या होता है, देखो मीटिंग में क्या क्या आपका कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया, या फिर आपका कुछ इंसाइट्स है, आप जितना डेटा फेच किए हो या फिर जितना इंसाइट्स निकाले हो, कुछ आपका इंसाइट्स है तो आप वो शेयर करते हो। और क्लाइंट का भी कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, वो शेयर करता है वैसे। तो पहले क्या रहता है, देखो फ्रीलांस में, मतलब मैं जितना देखा हूँ, आउट ऑफ दिस 8 फ्रीलांस सब में सेम ही हुआ है। आई डोंट नो, अलग फ्रीलांस में भी देखो हर क्लाइंट के ऊपर सब डिपेंड करता है राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग का क्या है, हम लोग पहले मीटिंग करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है क्या है। पहले वर्बली बात चलता है, वर्बली बात चलने के बाद एक एमओएम बनता है। एमओएम बनने के बाद उसको मेल में देन ट्रांसफर, एमओएम मेल में भी आता है, नो डाउट। उसके बाद क्या होता है, जो भी बातचीत हुआ उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके फॉर्मल या प्रोफेशनली मेल में दिया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, ऑल दैट थिंग। क्योंकि क्या है, जितना हमने बात किया दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन वर्बल का कुछ वो रिकॉर्ड नहीं रहता ना, रिटर्न का रिकॉर्ड रहता है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट में ही देख सकते हो, जितना चीज़ रिटर्न रहता है मेल में उसका रिकॉर्ड रहता है। क्योंकि सपोज क्या रहता है, कल को कुछ चेंजेस करना पड़ा, तो आप बोल सकते हो कि देखिए इतने का बात हुआ था, इतना चेंजेस करना था, और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप फिर बोलिए, इस टाइप से बोल रहा हूँ। तो सब चीज़ का एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। आप भी फ्यूचर में कभी भी कुछ भी रिलेटेड टू फ्रीलांस काम करोगे तो रिकॉर्ड हमेशा ध्यान रखना कि रिकॉर्ड हमेशा हर चीज़ का रहना चाहिए राइट। क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं रहा, कल को क्लाइंट भी आपके साथ धोखा कर सकता है। डजेंट मैटर, कहीं का भी क्लाइंट हो, फॉरेन क्लाइंट हो कि इंडियन क्लाइंट हो, डोमेस्टिक क्लाइंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आखिर है इंसान ही। और एज अ प्रोफेशनलिज्म प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि सारे चीज़ डॉक्यूमेंटेड रहे। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं रहेगा, मेल में नहीं रहेगा, तो आगे चल के मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी क्लाइंट को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही सब है। Oops. और आप लोग बताओ, आज आपने क्या किया, क्या क्या पढ़ाई लिखाई किया एंड ऑल दैट। आज का डेट कितना है? 12। 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
कुछ भी डाउट हो। ओके, वी हैव वन लाइव चैट फ्रॉम विकास कि भैया एक बात बताओ, आप जैसे कोई कंपनी आपको वर्क देती है तो उनके कंपनी में भी तो एनालिस्ट रहते हैं, वो आपको कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल आपको कैसे फॉरेन क्लाइंट मिला, लाइक सर्च कैसे किया? तो ओके देखो, कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या रहता है, आपके स्टेक होल्डर्स रहते हैं, राइट? कि आप जैसे डेटा एनालिस्ट के तरफ से जैसे काम कर रहे हो एज एन डेटा एनालिस्ट, आपको अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट का स्टेक होल्डर दे दिया जाएगा। जैसे मैं अपने टाइम का बात कर रहा हूँ, जब मैं अमेजन में था उस टाइम में देख रहा था आपका उधर का रिलेटेड टू लक्समबर्ग कंट्री का पूरा वेयर हाउस का जितना भी काम था रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स वाला काम, वो मैं देख रहा था। तो वो लोग मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे, वहाँ के मैनेजर्स या उसके डिपार्टमेंट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग कनेक्ट करेंगे आपको। वो लोग बोले हैं कि हमको ये रिक्वायरमेंट ला के दो, या तो आपको डायरेक्ट बोले हैं कि हमारा सेल्स टारगेट इतना हुआ है और कितना करने से कंपनी का दिस मच परसेंट ग्रोथ होगा। तो बहुत मीटिंग्स होते थे वहाँ पे। एंड इवन तो बहुत सारे डेटा सेट्स टेबल्स रहेंगे, आपको हर टेबल से बहुत कुछ निकाल के इनसाइट्स निकाल के देना पड़ेगा, राइट? बहुत कुछ रहता है, मतलब वहाँ ऐसा नहीं रहता है कि ओके मेरे को एवरेज निकाल के दो, ऐसा नहीं रहता है। वहाँ क्या रहता है, डायरेक्ट बोल देगा कि देखो हमको इतना का प्रॉफिट चाहिए, इतना सेल्स टारगेट हुआ है, और कित मैं जब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कितना सेल्स टारगेट होने से ये होगा एंड ऑल दैट थिंग। उसमें से आपको इवन तो ये भी देखना है कि लॉस कितना ना हो, ताकि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो सके। तो बहुत सारे टेबल्स में आप इर्द गिर्द घूमते रहते हो, बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहना है टेबल से, कुछ ना कुछ क्वेरीज लिखना है। ज़्यादा क्वेरी लिखने से ज़्यादा वहाँ सोचने का काम रहता है। वहाँ क्या, हर जगह डेटा एनालिस्ट का काम ही वही रहता है, स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेबल तो चलो आपको क्वेरीज आता है, दैट्स अ गुड थिंग, आप टेबल निकाल दोगे, एक टेबल से दूसरे टेबल से मैच करके डेटा निकाल दोगे, लेकिन एक बोलते हैं ना, टेबल जो आप आउटपुट निकालोगे उसको समझाना है सामने वाले को। वो कैसे समझाओगे? आप क्या बोलोगे कि हाँ इस टेबल से मैंने ये लिया, उस टेबल से मैंने दिस थिंग लिया, मैच किया, फिर टेबल निकाल दिया। बट वो तो आपको पता है, आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि मैंने इस टेबल से ये सब डेटा क्यों लिया, फलाना टेबल या टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी से मैंने ये सब डेटा क्यों लिया, और सारे को मिला के ये जो भी इनसाइट्स है वो सब मैं क्यों निकाला, वो सब आपको समझाना पड़ेगा। तो वो वहाँ आता है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग के लिए आपको पहले उनका बिजनेस समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, उनका क्या मोटिव है, उनका फाइनल एम क्या है। आपको उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा वाया मेंटली एज वेल एज थ्रू डेटा। जब आप और वो सेम पेज में रहोगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ वो क्या चाह रहा है आपसे, आप क्या देना चाहते हो, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखना मेरे मेरे प्रोजेक्ट में इसलिए देखना कि ईमेल कम्युनिकेशन दिया हुआ है बहुत सारा। दैट इज़ द ओनली रीज़न। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग बहुत करना पड़ता है एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्वेरीज लिखना इज़ नॉट टफ, लेकिन टेबल निकाल के उसको समझाना सामने वाले को, इट इज़, वहाँ पे आपका स्किल सेट आता है, राइट? तो वी हैव टू मैसेजेस फ्रॉम लाइक वन फ्रॉम विकास एंड वन फ्रॉम लूसीफर। हाय लूसीफर। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। तो वी हैव वन मैसेज फ्रॉम विकास, लाइक कुछ नहीं भैया, बस घर में ही काम चल रहा है इस वजह से। ओके, नाइस नाइस। लूसीफर, हाय सर, हाय लूसीफर, हाउ आर यू? हाँ विकास से, ओके, वी वन न्यू मैसेज फ्रॉम विकास कि भैया आप कैसे सीखे स्टोरी टेलिंग, कहाँ से सीखे जब आप फ्रेशर थे? जब मैं फ्रेशर था पहले कंपनी में, मैं बोला था ना कि मेरा बस 20% का ही सीक्वल का काम था, तो वहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट थे अपने कंपनी में।
तो उनका काम पूरा 100% डेटा एनालिस्ट वाला था। मेरा काम था, मेरा मतलब मेरे जैसे जितने भी न्यू एंट्रीज थे या मेरे लेवल में जो लोग थे, उनका काम था सिर्फ डेटा फेच करना और कंपेयर करना पिछले दिन का डेटा से और वीकेंड में पिछले हफ्ते का डेटा से और फाइनेंशियल ईयर एंड में पूरा ईयर का डेटा से कंपेयर करना। दैट्स इट, ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा था। स्टोरी टेलिंग मैंने उन लोग से सीखा कि कैसे क्या समझाना है, क्या करना है क्या नहीं पूरा। और वो ईजी है। वो स्टोरी टेलिंग आप तब सीखोगे जब आप मीटिंग में बैठोगे, या तो अपने क्लाइंट के साथ या तो अपने स्टेक होल्डर के साथ, राइट। जैसे कि आप मीटिंग में बैठोगे, आप डाउट पूछोगे कि अच्छा ये चाहिए तो इसमें से आपको क्या, क्यों आपको ये टेबल चाहिए, ज़्यादातर क्यों क्या वाला क्वेश्चन रहता है वहाँ पे। तो वो लोग बोलेगा हमको ये डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा है, जो भी एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आपके माइंड में भी डेवलप होगा कि अच्छा इस सामने वाले को क्या चाहिए, और सामने वालों को भी समझ में आएगा कि अच्छा हम लोग को क्या समझाना है कि ये हमें वो डेटा निकाल के दे, वो रहता है। तो जैसे ही आप मीटिंग में बैठोगे, मीटिंग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे इतना मीटिंग्स रहता है। और मेरे टाइम में तो फॉरेनर्स के साथ हैवी मीटिंग्स थे, तो उनका लैंग्वेज समझना तो और भी एक, बट ठीक है, हो जाता है। इतना साल काम हुआ है तो समझ में आ जाता है अभी कि वो लोग क्या चाहते हैं और हमें क्या समझाना है। हाँ, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम लूसीफर, एग्जाम डेट आ रहा है। मेरा 31 और 7 सेप, इनमें से चूज करना है। लाइक एनी वन डेट क्या? 31 सितंबर, मतलब 31 अगस्त आई थिंक सो, एंड 7 सितंबर। देखो ये डेट आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से चूज करो, आप जैसे प्रिपेयर हो उसी हिसाब से, राइट। जैसे आप प्रिपेयर हो उसी हिसाब से आप चूज करो डेट्स, करेक्ट, एज पर योर प्रिपरेशन, राइट। अगर ठीक है आप पूरे वेल प्रिपेयर्ड हो देन 31 इज ओके। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को प्रिपरेशन का ज़रूरत है, देन 7th। हमारे पास दो ऑप्शन है, तो एनी वन यू कैन चूज एज पर योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को मद्देनज़र में रखो, देन यू सी कि कौन सा डेट सही रहेगा। आपका जो प्रिपरेशन रहेगा उस पर, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, लिखना आपको है पेपर में। तो आप तभी लिख पाओगे, तभी एग्ज़ाम दे पाओगे जब आप प्रिपेयर रहो, राइट। तो एज पर योर प्रिपरेशन आप अपना डेट चूज कर सकते हो। ये और है कि मतलब स्लैश है वो, वो एक बार बोलना। ओके, वी हैव 3 मैसेजेस फ्रॉम लाइक लूसीफर एंड विकास, 31 एंड, अच्छा दोनों एंड है क्या? ओके, आप किस कॉलेज से हो लूसीफर? ओके, तो यू वो टॉक राइट नाउ, लेट मी जस्ट डू सम वर्क इन दिस। Okay, so let me post one question related to Python, Python for data analytics, right? उसमें एक क्वेश्चन मैं ये करता हूँ, जस्ट लेट मी पोस्ट दिस, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें related to Python for data analytics. Let me type it. Okay, which matplotlib function is used to draw bar chart, right? स्टार्ट पोल करता हूँ, चार ऑप्शन है, डॉट बार चार्ट, डॉट बार प्लॉट, डॉट बार्स। सो लेट्स सी कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। आई होप लूसीफर विल बी एबल टू गिव करेक्ट आंसर, क्योंकि लूसीफर अभी मैटप्लॉटलिब के फंक्शंस का पढ़ाई कर रहा था इसीलिए।
So we have lots of messages. I think पहले messages विकास और लूसीफर के चिट चैट्स हैं, तो let them work on that. एंड लास्ट मैसेज विकास PLT डॉट बार प्लॉट, वो आप ऑप्शन में दो, मैं लास्ट में करेक्ट आंसर दूंगा, राइट? वो आप ऑप्शन में दो, मैं करेक्ट आंसर दूंगा, लेकिन करेक्ट आंसर देख के जाना, दैट्स द मेन थिंग। आई होप आंसर, हेलो, हाँ। सो हाय हाय प्रशांत, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Thank you for introducing us to data cleaning through this channel. I even don't know this career is also exist. Yeah, data cleaning is a part, not I mean, see, the things you do, let me tell you, related to like removing duplicates, removing null, that you might also be doing, but the same thing is also called data cleaning. That's it. That is not anything, I would say, not that technical or not that kind of rocket science. These things each and everyone know, and these are the basic things. Each and everyone know this. Each and everyone does data cleaning during their practice time as well. So these things are already introduced to you during your studying time. I would say during your freshers time, when you are learning related to data analytics. Only these names are given. That's it. That's it. So you have already did it, but yes, thank you for what was appreciating me for this. There are lots and lots of videos as well who teach related to data cleaning, data modification, manipulation, and all that thing. So my main motive is, you know what? My main motive is to let everyone know what actually goes on behind the scene of a data analyst. Why I'm saying, because see, each and everyone study all these things like related to data analytics, but nobody's have an idea like why are we actually studying this, where would we use all these things, right? So I want to showcase them, like, if you learn these things, you will use this all concepts, this all logic, I mean to say, here, like anywhere in corporate sector or in freelance sector, like that. So that's what I mean to say, so that at least you would be able to know ki why are you learning this. See, let me tell you one example. You learn cycle at your early stage, because you know, if I learn cycle today, tomorrow I would be able to ride a bike or a scooty. So you know that, and that's what motivate you to learn cycling. That's it. Same thing I want to showcase each and everyone in YouTube, through YouTube, that what actually you will do after learning all these things, right? So that's what my motive is. And thank you to see that people are learning from these things, and that's what makes me happy, right? Still, any doubt, I am ready to help each and everyone. I hope my sound is yeah, sound is audible, right?
Yeah, we have one message from Lucifer. Like, I want to share syllabus with you, sir. Can you help me plan my study pattern? Yeah, you can share. I won't be having that much idea related to BCom or MCA, the course you are running for. But yeah, you can share. I can help you out because I don't know the volume of the course. That's why. But okay, you can share it. No worries. No worries. But let me tell you one thing. Right now, till 7th, you should be focusing on preparing uh, anything related to the course, right? If you think like joining my live stream is kind of कि आपका time use हो सकता है, so I think you should till 7th I think you should focus more on the course, right? और मैं तो बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, राइट? आई वुड से करेक्ट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम में मत आओ, लाइव स्ट्रीम में आओ, नो नीड टू वरी अबाउट, यू कैन ज्वाइन माय लाइव स्ट्रीम, यू कैन सी मी वर्क एंड मोटिवेट एंड गेट like from this motivation you can also study by seeing me, that's a good thing, right? So but make sure कि आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो हैम्पर ना हो, राइट? फॉर माई लाइव स्ट्रीम ये ध्यान देना आप, राइट? मतलब मेरे लाइव स्ट्रीम देखने चक्कर में आप अपना पढ़ाई का टाइम वेस्ट ना करो, वो एक बार ध्यान देना, राइट? तो अभी 7th तक आप अपने हिसाब से यू कैन प्रिपेयर, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन शेयर योर सिलेबस इन माय मेल आईडी, यू कैन शेयर। कोर्स बड़ा होगा तो यू कैन शेयर योर सिलेबस एज वेल, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? नो नीड टू वरी अबाउट, बट मेक श्योर कि आपका पढ़ाई का टाइम हैम्पर ना हो ड्यू टू माय लाइव स्ट्रीम, करेक्ट? मेक श्योर यू डू दैट एंड प्लीज ask doubts, anything related to Python for DA, SQL, anything. Okay, we have one message from Prashant. What kind of data freelance work you do for your client? Same thing. See, they also, what, let me tell you, there also data sets get updated each and every week because they are having more than 7 stores in Vietnam. What stores that I cannot tell, but you can understand like what kind of stores they have. Right. But it is a legal kind of thing. So they have all the 7 stores, more than 7 stores in Vietnam. So what happens, all the data they receive from either Excel, Tally, SAP, they take all those data and send it to me. I clear it out and make data cleaning, remove duplicates, all that stuffs, clean that data, represent a, I would say, clean and final data to them per week, and from that data they ask me related some insights like what should be done here, what should be done that, what if this things are eliminated, all those things they ask related to the requirement. What they ask that I cannot discuss here in online because yeah, that's kind of, I would say, what we say, that's kind of privacy issue kind of thing. So that's what I work for. Yes, sir, I have sent. Yeah, let me just. Yeah, okay, I've received it. It is in Google Drive ka screenshot what I can see.
Okay, I will help you out in this. Just give me some time. I will help you out in that. Okay, give me some time. I will help you out in that. Yeah, I sent the drive link. Yeah, I've received your Google Drive link. So what topics? I mean, you are having exam for? Can you tell that as well? Like what topics? You have to prepare for 31st and 7th. If you tell me that, I will be like more precise related to this. Any doubts? Just a minute. Any doubts? Anyone? Okay, we have one live chat from Hi Devarshi. Welcome to live stream. Hi Devarshi, welcome to live stream. So we have one live chat from Devarshi. Like, is it possible to convert from string to integer in CSV? I wanted to build a predictive model, but showing error because CSV file containing string. Yeah, it is. It is. Matlab, what you need to do, you need to encode the string value into numbers. That's it. Matlab, just convert the string values to numbers. ठीक है? It is same process. No need to worry. How you will do? You will use fit transform and change all the columns. That's it. You can use that. Correct? Fit. Yeah. Fit transform. That function is there. And use pandas as well. Import pandas and label encoder. These things will be used for that. Right? This thing will be used for that. Label encoder, pandas, and fit transform. These three things are used when convert string value into numbers, right? So that's it. Okay, we have Lucifer message. All the topics. Okay, all the images that you have sent, that topics, right? So okay. Just give me some time. I will tell you, right? I will tell you after this live stream. I will send you this, correct? Because I have to think like what is there and what is not. I have to check each and every photos as well. So give me like today only I will send you. No need to worry about. So hi, Mr. Versatile. Welcome to live stream. Hmm. So I am applying for job. Can you give resume tips that can shortlist for data job role? Yeah, easy. No need to worry about data analytics tip. में maximum. See, in today's world, everything is related to ATS, correct? So ATS friendly ka aap what you do, you use keywords for that I have used already when I was applying ATS friendly keywords. Use that. Second, project should be there. ठीक है?
project should be there. And third thing, there should be one section called skill section. Skill section, why I am saying, because ATS find all those keywords जैसे Python, NumPy, Pandas, SQL, ये सब. तो skill section will be there ना, a different skill section करके. ATS will be easily able to match it up and select your resume for I mean to say, for the recruiter. So what actually ATS does, what they do, हाँ, they search for relevant keywords. जैसे कैसे कैसे keywords, projects, this keyword, क्या क्या project है, everything they will search. Then skill देखेगा, just like Python, NumPy, like that, correct, इस टाइप का. और projects में also you have to write what you did with number format. मतलब you should use numbers inside theory. You should not write कि I have done data cleaning, I have done this much sales output, not like that. What you have to write कि I have done, suppose I have, you can write like this, from the raw data set I have done 70% of data cleaning. See, numbers is there. Out of that, I have changed date format, which was covering around 40% of the raw data. ठीक है, like that. मतलब numbers should be there. Why I am saying numbers? First thing, professionalism. It shows like how professional you are. Second thing, it shows कि it shows कि yeah, this guy has actually done something because he is using numbers. So when someone uses numbers, it shows that this guy is confident कि हाँ, इसने 40% काम किया हुआ है डेट क्लीनिंग में. और फ्रॉम रॉ डेटा दे हैव done 70% of data cleaning, like this. Make sure in projects you use lots and lots of numbers, right? ATS searches that, as well as recruiter also search that. And during interview also you tell any recruiter or freelance client कि I have done this much number of things. You should not tell theory. Theory will be like story kind of thing. That doesn't work. Everything goes on technical wise, right? You will tell, yeah, 30% of cleaning has been done. There were 50,000 rows or 1 lakh rows. Out of that, 40% of date format have been changed to default format, like this kind of thing, right? And let me tell you, make sure you make your CV maximum for 2 page. 1 page is good to go. Maximum 2 page. This should not increase or should not go to the third page. Should be maximum 2 page max. Even in 1 page, good to go, right? So no need to worry about that. And these are the things, I would say these tips had helped me a lot for finding a job role. ठीक है. We have one message from Prashant. If there is any project that is challenging and having SQL is not enough for data yeah, there is in next project. Let me, I will show you one, I would say, email cleaning का काम. ठीक है. In that, if you see and if you use logic, you will get to know that in Python in 3 line we can do email cleaning. ठीक है. But same thing if you do in SQL na, it will take 6 line. Correct. That's the thing. That's where logic comes in. So it happens a lot of time and we do all these things. No need to worry. In next project you will see. Right? Next project matlab it will be related to Python. This project what I have done, it was fully on SQL background. Next project will be fully on Python background. ठीक है. So no need to worry for that. You will be able to know all these things. And any more doubts? Okay, we have one message from Devorshi. Like strings were converted to integer after using ARG short. No. Index, इसमें index का काम आता है. See, ARG short जो है does not actually convert string to integer. It returns the index position that would sort your given data. That's the thing. वो change नहीं करता है. Does not actually change. I mean convert नहीं करता है string को integer में. ठीक है.
वो बस वही रिटर्न करेगा डेटा जो कि मतलब इंडेक्स पोजीशनिंग है ना, वही डेटा रिटर्न करेगा आपके डेटा को सॉर्ट आउट करके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो इंडेक्सेस नंबर है, वो नॉट द स्ट्रिंग वैल्यू टर्न इनटू इंटीजर, राइट। जो नंबर आप सोच रहे हो कि कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, समझ रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट इट इज कंफ्यूजिंग, एवरीवन गेट कंफ्यूज्ड। तो द थिंग इज दैट कि उसमें क्या रहता है, ये बात ध्यान रख लो आप देवर्षि, कि you actually do not convert string to integers, it just return the index position that would sort your data, that's it, right. Hmm. Okay, we have one message from Lucifer. I have started practice for Python fundamentals from Perplex. Okay, AI जो है Perplexity AI. I told create question for practice without answer so I can practice. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. That's a good use of AI, I would say, and good use of Airtel free AI, I would say. Use that thing. And we have two more messages. I have problem in maths. I am not that good in maths. Oh, okay, no issue, no issue, no issue for that. Everyone is having problem in any of the subjects, right? For me, chemistry was worst, I would say, worst. But anyways, we have to study. So no need to worry about any more message, any more doubts. Okay, we have one message from Devorshi. The accuracy score went worst after tried converting string to integer in CSV by using ARG short prediction model. Okay, see your accuracy, why it is dropped, because you know, as I've told you in the previous डाउट क्लियरिंग, मतलब टुडे, आज का ही प्रीवियस डाउट क्लियरिंग, कि आर्ग सॉर्ट जो है वो does not actually convert string into numbers, right? Let me tell you that. तो मतलब this is the only reason, and what it does, you know, it just return the position that would sort them, which introduces, I would say, random integer level unrelated to the actual category. So that's the thing. But take just one line in your mind, just a minute, just take one line in your mind, keep that in mind, कि arc short जो है वो does not actually convert string into meaningful numbers. That's the thing. Make sure you remember this, because I know it is confusing, but still remember this thing. We have one message from Mr. Versatile, like as freelancer how much you get paid. See, paid का वही ना, $7 to $13 per hour का रहता है, पर आवर का, डिपेंड काम कैसा है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से रहता है, राइट। तो इट इज़ नथिंग लाइक कि कुछ फिक्स रेट है। आज सपोज ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ मतलब ऐसा काम नहीं हुआ कि $13 मिले, ऐसा हो सकता है आज जितना काम करूंगा पर आवर का $8 मिलेगा, ऐसा हो सकता है, वो क्लाइंट डिसाइड करता है, वो आपको रेंज, मतलब मैं अपना बोल रहा हूँ, ऐसे भी रहता है, जब जस्ट लाइक इफ यू से माई फर्स्ट फ्रीलांस वर्क दैट वाज फॉर 10,000 for 2 days. So they will give as much as work they want to give you. There is no boundary for that. But in this freelance work, there are limitations, like for this much kind of insights and this much kind of work, that I won't say, because that is their model, that is their pay scale model. So that's actually private kind of thing. But I can say you one thing, it is from $7 to $13, regardless of how much work and what kind of work intensity they give to me, right? Sometimes if the work is huge and lots of logic, or lots and lots of insights are required, then it goes to $13. But if, like, minimum, I would say $8 kind of work I used to get, मतलब when starting with this client, I used to get $7 to $10 का range में था. But what happened, step by step, their data set also get increased daily, but they give me in a weekly basis, but still I would say on a daily basis their also data set increases, their also stock increases in their inventory, their also, I would say, outbound kind of things increases. So everything we have to take care of that. So in that way, hourly basis and work basis fluctuate a lot.
hourly basis payout and work basis kind of insights fluctuate a lot. So in this way, the payout also get on the point. So the thing is, on the day one, starting day only, they've given a chart ki isi hisab se you will get paid. So it's okay. I've told yes, and that's it. But it varies on, I would say, client to client. Different clients will be having different kind of payout scale. So there is nothing called ki this is the only paying model for um, a client in the whole world. Each and every client have a different payout scale. Each and every client have a different kind of, I would say, payout structure, work structure. So it is like that, right? So there is nothing called कि हाँ universal structure है कि ऐसे ही payment, nothing like that. So that's the thing. So any doubts? Anybody have? Ask your doubts in my live stream. As a okay, we have one message from Prashant. Just a minute. As a data professional, mastering data cleaning on massive data set using SQL and Python can count as a skill. Yeah, this is what actually data analysts do. See, if you ask me related to interview, and if I take someone's interview, I have not taken any interview till date. Let me tell you that if I take any interview, I would not ask for any queries or something. Directly, I will ask what was your experience when you get a raw data. From there only, I will get to know that yeah, this candidate have studied, done project, and came here for the interview, or that candidate had actually worked or having a proper. Because the thing is, see, lots and lots of people will be having a fake kind of work ex. So in that way, you can understand like what problem he or she had faced during data cleaning when they get raw data, because lots and lots of what I would say headache is there when you get this raw data. Like they do not, they won't be having any, बोलते हैं ना सर पैर नहीं रहता, that's the thing. They won't be having anything, no starting point, no end point. You have to clean everything, that too not in Excel, that too in either SQL or either Python. So it's like that, right? It is, yeah, obviously it's a skill. That's where you build logic. And related, if you are asking for skill, one more thing is like storytelling is also a skill. Storytelling in the sense you will be getting a table out of all the data sets, and you have to make sure, you have to make sure the table that you have found out should be understood by the stakeholder or the freelance client properly, because for them it's a table, but for you as a data analyst it is something which will give a meaning related to business growth or related to profit growth, anything. It's like that, right? Anything else? Okay, we have one more message. Mastering SQL, mastering data cleaning using SQL or Python is enough for earning good money, or will need extra skill? Is mastering data cleaning not enough? It is, it is. Let me tell you related to this. I mean, earning and skills. Each and every client have a different kind of requirement. So as per requirement, if your skills are matching their requirement, then it's good to go. You will get good kind of earning, good kind of payout. And if it is not okay, no need to worry. There would be some or the other client who will hire you for your skill set, which will be matching their requirement. So it is like that.
right? It is not like ki this much you will study, yeah, this will be the companies or freelance requirement. It's not like that. Every client have a different kind of requirement. So that's the thing, your skill set or your experience, if matching their requirement, good to go. If not, no worries, there will be some or the other client who will hire you related to your skills and their requirement. It's like that. So that's why, that's the thing. And any more doubts, anything? Any doubts, anything, just ask me in the live stream. Ask your doubts, ask your doubts. Any doubts related to SQL, Python 40A, anything? Okay, we have one message from Lucifer Lex, sir. What is simplified chain
कंपैरिजन इट इज़ लाइक राइटिंग इन अ सिंपल वे, दैट्स इट। मतलब जैसे कि आप लिख सकते हो, एक मैथ कंपैरिजन है। जैसे सपोज आप लिखोगे सेल्स मोर देन 5,000 एंड सेल्स लेस देन 10,000, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, बट आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? सेल्स लेस देन 10K, और या तो आप ऐसे लिखो, मतलब सिंप्लीफाइड वे में लिखना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब एक लाइन को एक ही सिंपल वे में लिखने को सिंप्लीफाइड चेन्ड कंपैरिजन बोलते हैं, दैट्स इट। मतलब नॉट इन अ कॉम्प्लेक्स वे, इन अ सिंपल वे। मतलब बोलते हैं ना कि रिपीटिंग वेरिएबल्स ना हो, जैसे कि यहाँ पे सेल्स दो दो बार आए, एक ही बार सेल्स, दैट्स इट। So it is like that.
Hello, yeah, I'm back in my live stream. Just a quick call. Okay, so we have received 10 votes right now related to the quiz, and let's end the quiz here and start with a new question. I hope I'm audible. Yeah, I'm audible. Or should we wait for more 15 minutes? Let's wait for more 15 minutes and then I will give a new question related to Python for data analytics. Correct? So let's see how many more votes we will get. Mm, okay. Please give your votes in this. Ask your doubts and please participate in the live stream and in the live quiz as well. Any doubts? Anything? Okay, we have one live chat from Mayuri. Hi, welcome to live stream. Welcome to live stream. And please ask your doubts, any suggestion, any feedback, anything. I'm ready to help you out in that. Uh, does this? Yeah. So yeah, hi Samu, welcome to live stream. Welcome to live stream. Hi Samu, welcome to live stream. Any doubts you have related to SQL, Python for data analytics, related to my project as well, related to career advice, anything? You can ask career advice in the sense if you want to jump to data analytics career or you are a data analyst, want to excel in that field, you can ask me out. If you have any doubt where lots of explanation is needed, you can mm, write a mail in my mail ID, as well as if you are working on some code or a query and if you have some issues in that code, like if you get any error and it is tough for you to figure out like what is this error all about, so you can take the screenshot and attach that photo in the mail and send me. I will help you out in that, right? So we do live stream each and every day, and also do check out my SQL project for data analytics end-to-end project, where we cover data cleaning, data modification, data manipulation, date format change, email communication with the freelance client, storytelling. Each and everything is there in this, right?
Please give me the mail ID. Yeah, sure, sure, sure. Why not? Doubt session. Let me write my mail ID here. Classes me at the rate classes with me at the rate gmail.com. Yeah, that's my mail ID, and I have done a pinned comment as well. So, yeah, that's my ID. You can just mail me there. Any doubt, any descriptive doubt, you can mail me out, right? And please do check my SQL project in my YouTube channel, and please give your valuable feedback, because the thing is, each and every month I will be uploading project, and in that way you can also learn about new projects, how actually like things goes on at the back end of a data analytics or a data analyst. Doesn't matter if that data analyst is working in a corporate field or a freelance field. We have one message from Samu, like can sorry for pronouncing your name in wrong way, because I am very bad at pronouncing name. I'm very sorry for that. Can we connect on LinkedIn? Yeah, why not? Why not? I have my LinkedIn ID as well. Just a minute. LinkedIn ID. Yeah, that's my LinkedIn ID. I have given my LinkedIn ID in the live chat. Please connect. Like if you want, you can connect to me there as well, right? Mm, yeah. Any doubts? Anything you need to know? I'm ready to help you out. Actually, we do live stream each and every day, so you can participate in my live stream, and we can just clear our doubts. That's it. So ask your doubts. Any doubts? Anybody have?
Any doubts? Anything? Just ask me in the live chat. Hmm. Okay, ask me in the live chat. Wait a minute. Let me share. Yeah. Centimeter df. Yes. So we have got 13 votes. That's a good thing. I was actually closing the live quiz on 10 votes, but still we have 4 more minutes for 1 hour. So, and that I will ask a new live quiz question, right? So we have 4 more minutes. Let's see how many votes do we get in the live quiz, right? Any doubts? X represent the
Hey, hi Sambit, welcome to live stream. Hi Sambit, welcome टू लाइव स्ट्रीम। हेलो भाई या हेलो संबित, अभी ऑफिस ख़त्म करके आ रहा हूँ। नाइस। आज मेरे को डिपार्टमेंट मिल गया। अभी टेंशन कैसे 2 साल बाद डेटा एनालिस्ट फील्ड में हो जाएगा यार। पर देखो है क्या, अभी तो फर्स्ट डे। अभी 3 महीना तो अभी आपको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद देखो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन रहेगा ना। सो द थिंग इज वी हैव क्लोज द लाइव quiz right now, and the correct answer is we have in the front of us, that is 14% have given correct answer for this plt dot bar, right? Correct answer, that's the correct answer. Now let's move to a different question from my question set. Let me type the question here. What does df dot describe do? Let me give only two uh, option for that, and let's see what answer do we get. So the question is, what does data frame dot describe do? First option is show statistical summary, and second option is convert data type, right? We have one message from Sambit. इसमें सब testing ये है, like DB testing, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एक्सेट्रा। अभी मेरे को बैंकिंग डोमेन में मिला है, राइट राइट। क्लाइंट साइड से काम करना पड़ेगा इस टाइप का काम, या राइट राइट, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है। ज़्यादातर क्लाइंट्स आउटसोर्स करते हैं। सिंपल जस्ट लाइक एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, वहाँ से लोग आउटसोर्स करते हैं मैन पावर, सप्लाई मैन पावर करते हैं। आपका एक्सेंचर ये सब जितने भी कंपनीज हो सब मैन पावर सप्लाई करते हैं, एंड देन दे वर्क लाइक दैट। Any doubt, any doubt, any doubt you have, you can ask me out in my live stream, and please do participate in my quiz as well, right? And that's a easy quiz, so no need to worry about. You can figure it out. Easy quiz, right? So just participate.
आस्क योर डाउट्स। ओके, वी हैव वन मोर लाइव चैट फ्रॉम संबित। अभी मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं थे कि 2 साल के बाद डोमेन चेंज करूंगा, तो वो सब हंस रहे थे। कुछ नहीं हो सकता, चेंज करोगे तो उसी डोमेन में करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो तुम्हारे दोस्त लोगों को तुम लोग पूछना, तुम लोग काम किया है क्या उस डोमेन में, फिर चेंज किया है क्या, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। और उनको एक चीज़ बताना, मतलब ऐसे ऐसे लोग देखें सेल्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर में बनते हैं, इस टाइप का डोमेन चेंज करते हैं, राइट। तो उन लोग, जो दोस्त लोग जो हंस रहे हैं, वो लोग को आइडिया भी नहीं है कि 2 साल के बाद क्या डोमेन है क्या नहीं। दे डोंट हैव आइडिया बिकॉज उनको अपना फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। लेट मी टेल यू दैट, आपको आपका फ्यूचर क्लियर है, आपको पता है आगे आपको क्या करना है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू विल डू दैट। आप डोमेन चेंज कर पाओगे, कुछ ऐसा ये नहीं है। फर्स्ट थिंग वाज आपके पास वर्क एक्स है, दैट्स द बिग थिंग। मे बी शायद आपके दोस्त के पास वो वर्क एक्स ना हो, क्या पता 2 साल के बाद वो गैप रह के कोई हायर ना करे। आपके पास एटलीस्ट वर्क एक्स है, यू कैन मॉडिफाई दैट वर्क एक्स कि हाँ मैं इधर टेस्टिंग भी चल रहा था और टेस्टिंग के टाइम मैं डेटा फेच कर रहा था थ्रू सीक्वल थ्रू पाइथन, ऐसे बोल सकते हो, राइट। यू कैन डू और क्यूरेट और आई मीन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम योर वर्क एक्स, राइट संबित। तो ऐसा नहीं है वो, मतलब ऐसे ऐसे देखो ना यार, कॉल सेंटर जैसे डोमेन से लोग डेटा एनालिस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं भाई, एसडी बन रहे हैं, एसडी, जिनका पैकेज मोर देन शायद 30-40 रहता है स्टार्टिंग, मोर देन 30-40 स्टार्टिंग पैकेज, मतलब सोचो। तो ऐसा नहीं है, सब होता है, सब डोमेन चेंज होता है, सब कुछ रहता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, करेक्ट। तो नो नीड टू वरी अबाउट। हाय ओशो वर्ल्ड, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओशो वर्ड सॉरी, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाँ भाई, ये क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, ये नेक्स्ट मंथ का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी, आप अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे तो मेरे पास प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है रिलेटेड टू सीक्वल का, सीक्वल फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड टू एंड प्लेलिस्ट है। और उसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इन सीक्वल एज अ फ्रीलांस क्लाइंट, वर्किंग फॉर अ फ्रीलांस क्लाइंट। तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने इस महीने वीडियो डाला, वैसे ही अगले महीने मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट डालूंगा, दैट टू इन पाइथन बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन लेना, क्या क्वेश्चन उठाना सही रहेगा, राइट। तो वो बात है, मैं वही कर रहा था, राइट। अगर आप देखना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ये मेरा लाइक यूट्यूब लिंक है फॉर दिस what we say SQL project, right? Let me tag you, right? Okay, we have one live chat from Lucifer, like function and classes concept पे practice करनी पड़ी मेरे को। या sure sure, do it, do practice, right? मैथ्स वीक है, मैथ्स तभी वीक होता है जब प्रैक्टिस कम रहता है, राइट। सेम चीज़ अगर आपका कोडिंग वीक है, दैट मीन्स आपका प्रैक्टिस कम है, नॉट ओनली आपका, सबका सेम सिनेरियो रहता है। तो नो नीड टू वरी अबाउट, प्रैक्टिस की कमी है, बाकी सब ऑन पॉइंट बैठ जाएगा, राइट। ओके, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम संबित, लाइक भाई बिजनेस एनालिस्ट टेस्टिंग में है क्या? बिजनेस एनालिस्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है। टेस्टिंग इज समथिंग जो लॉन्च कर, मतलब जो एक्चुअल कस्टमर के हाथ में आने से पहले जो टेस्टिंग होता है, दैट इज़ द थिंग। मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, करेक्ट, वो कस्टमर के मोबाइल या कस्टमर यूज़ करे उससे पहले सब टेस्टिंग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे नेम सेक्शन में अगर कोई
सपोज स्ट्रिंग के जगह नंबर लिख दे, मतलब सपोज ABCD के जगह 1 2 3 4 लिख दे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो टेस्टिंग होता है। मतलब क्या होगा, सपोज नेम करके एक सेक्शन होगा, राइट, और वो कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले आप टेस्टर्स के पास जाएगा, आप लोग चेक करोगे, आप लोग कॉमा दे के देखोगे कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है देन ओके, आप नंबर्स डाल के देखोगे, सब कुछ आप अप्लाई करके देखोगे, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट्स, राइट। क्यों? क्योंकि क्या रहता है, बाय मिस्टेकली अगर स्ट्रिंग या अल्फाबेट के जगह वो नंबर ले लेता है या एट द रेट या कुछ भी सिंबल ले लेता है, तो कस्टमर तो बोलेगा यार ये क्या एप्लीकेशन बनाया करके, क्योंकि कस्टमर गलती कर सकता है, माफ चलेगा उनके लिए, लेकिन अगर डेवलपर गलती करता है तो वो कंपनी पे डायरेक्ट एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, राइट। तो इसीलिए टेस्टर रखे जाते हैं ताकि वो टेस्ट करें हर वो चीज़ डाल के जो एक्चुअली नहीं डालना चाहिए। मतलब नेम में ओनली अल्फ़ाबेट्स जाएगा, अल्फ़ाबेट स्पेस ये सब जाएगा, कोई सिंबल नहीं जाएगा, कुछ कॉमा वगैरह फुल स्टॉप ये सब नहीं जाना चाहिए। तो आप एज अ टेस्टर वही करोगे, आप फुल स्टॉप दोगे, आप कॉमा दोगे, एट द रेट दे दोगे, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कुछ अनवांटेड रिक्वायरमेंट जा रहा है कि नहीं, दैट्स द थिंग। आप टेस्ट करके फिर बोलोगे कि हाँ डेवलपर ने यहाँ मिस्टेक किया हुआ है, यू शुड करेक्ट इट, एंड दिस इज व्हाट दे गोज ऑन। मतलब एक बोलता है ना शैडो क्वालिटी टेस्टर टाइप का राइट। जैसे क्या बोलूँ, एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होने के लिए एक एग्जाम होता है, जस्ट टू सी कि आप सही किए हो कि नहीं, वही चीज़ टेस्टर का काम है। आप जस्ट चेक करोगे कि वो जो ऐप बनाए हैं या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं टू द कस्टमर, बिफोर जंपिंग इनटू द मार्केट, वो सब सही काम कर रहे हैं कि नहीं, वो काम रहता है टेस्टर का। दिस इज वन पार्ट ऑफ टेस्टर। अलग अलग चीज़ के अलग अलग टेस्टिंग सेक्शंस होते हैं। ये तो मैं एक्सचेंजर का बात कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त लोग काम कर रहे थे वो इस सब चीज़ में काम कर रहे थे, राइट। तो ऐसा रहता है। तो भाई बिजनेस एनालिस्ट टेस्टिंग में क्या, नो नॉट रियली। हमारे डिपार्टमेंट में तो है, लाइक उनका काम वो रिक्वायरमेंट लेके आएंगे, वो हमको देंगे, आपको पता है कुछ आइडिया, या राइट, या फिर ये हो सकता है लाइक बिजनेस एनालिस्ट कुछ अगर ऑटोमेट कर रहा होगा, वो आपको टेस्ट कर रहा होगा, तो वो एज अ टेस्टर फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट, या ये हो सकता है। बिजनेस एनालिस्ट हर जगह है, डेटा एनालिस्ट भी हर जगह है, बट द थिंग इज कि बिफोर जंपिंग इनटू द रियल मार्केट एक टेस्ट किया जाता है जो आप टेस्टर लोग करते हो फॉर दैट सर्विस और फॉर दैट प्रोडक्ट। सो दैट्स द थिंग, डजेंट मैटर वो बिजनेस एनालिस्ट का हो, डजेंट मैटर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का हो, डजेंट मैटर वो वेबसाइट को, वेबसाइट लॉन्च होने के पहले भी टेस्टर रहता है। तो यही सब है। एनीथिंग, ओके, 2 मैसेजेस फ्रॉम लूसीफर लाइक क्लासेस का प्रैक्टिस कम है, मैंने अभी नोटिस किया सबसे ज़्यादा नंपाई चालू हुआ है तब से क्लासेस और फंक्शन के ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्लास और फंक्शन, ओके, और मैं भी नहीं हुआ है। ओके, यू जस्ट रिवाइज द सेक्शन, अब देखो कि एक्चुअली क्या करिकुलम है नॉल। संबित लाइक एसडी का सैलरी ऑब्वियसली भाई, एसडी का सैलरी ह्यूज है। मतलब हमारे वहाँ एक एसडी था, उसका एज, अमेजन का बात कर रहा हूँ, उसका एज था समथिंग 25 ईयर्स ओल्ड, राइट। वो वहाँ से पढ़ा होता है, एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, कोई आईआईटी एनआईटी का नहीं था वो, वहाँ से पास आउट था। 1 साल वो इंटर्नशिप किया डेलॉयट में, ठीक है। इंटर्नशिप करके वो अप्लाई किया अमेजन में, पैकेज गया उसका 70 lakhs पर एनम, पैकेज 70 lakhs पर एनम एट द एज ऑफ 23 या 24, जस्ट थिंक। उतने में हम लोग को पहुंचने में भी शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में ना हो, बट हाँ ये बोल सकता हूँ अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो इजीली यू कैन रीच दैट हाइट, राइट। 70 lakhs आराम से पहुंच जाएगा अगर आप क्लाइंट के लिए कुछ काम कर रहे हो तो, क्योंकि क्लाइंट आपको डॉलर्स में देगा या फिर उनके करेंसी में देगा, तो वो कन्वर्ट करके आप पहुंच जाओगे। लेकिन भाई एसडीज का वैसे काम भी रहता है, उनका प्रेशर भी बहुत रहता है, उनका लॉजिक बिल्डिंग हम लोग से बहुत 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 आगे का सोचते हैं वो लोग, ये बोल रहा हूँ एसडीज का। तो उनका सैलरी वैसा रहता है, उनका काम वैसा रहता है, तो जैसा काम ज़्यादा सैलरी, और क्या।
बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब करोड़ करोड़ तक जाता है पैकेज। मतलब एक्चुअल ऐसा नहीं कि करोड़ पूरा मिल जाता है, इन 1 करोड़ अगर जाता है तो। अमेजन का बोल रहा हूँ, वो लोग स्टॉक में 50-60 लैक्स लगा देते हैं स्टॉक्स में। फिर जो 40 लाख बचता है वो इन हैंड आता है उनके, वैसा रहता है। तो जो 70 लैक्स का जिसका पैकेज था, उसका समथिंग अराउंड 20 लैक्स या 30 लैक्स था ओनली स्टॉक्स में, जो कि अमेजन स्टॉक्स में रहेगा। आफ्टर 5 ईयर्स वो मिलेगा, डजेंट मैटर वो बढ़े या कम हो, दैट्स द थिंग। और बाकी जो बचा रहता है वो आपको इन हैंड आता है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो बहुत दिमाग चाहिए भाई, बहुत लॉजिक बिल्डअप चाहिए एसडी के लिए। तो वैसा काम भी है वो तो, लॉट्स ऑफ वर्क। इट्स नॉट अ जोक कि एसडी बन जाए। एसडी के लिए भाई बहुत बहुत ज़्यादा काम चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हैवी लॉजिक बिल्डिंग चाहिए, हैवी लॉजिक बिल्डिंग। ये सब जो डेटा एनालिस्ट ये सब लॉजिक बिल्डिंग है, बट वैसा नहीं है जितना एसडी का ज़रूरत पड़ता है। एसडी का ब्रेन गोल्ड गोल्ड रहता है, वो गोल्ड ब्रेन वही होता है एसडी का ब्रेन सब। हाँ, हाँ, संबित से वन आप तो ए आई एम एल एस डी को टक्कर दे सकते हो ना भाई। एस डी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर मैं फ्रीलांस में काम करता रहूँ तो शायद उनके उस लेवल के सैलरी में पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, राइट। ए आई एम एल अभी बेस्ट स्किल्स है, हाँ स्किल्स बेस्ट है, बट वैसा चाहिए, वैसा लॉजिक बिल्डिंग भी चाहिए। क्योंकि कंपनी क्यों देगा किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ या 70 लाख 80 लाख। ऑब्वियसली अगर वो कंपनी के लिए महीने का 100 करोड़ का प्रॉफिट ले पाएगा तो उसको साल का 1 करोड़ मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब आप जितना भी काम कर रहे हो वो कंपनी के लिए 1/10 ऑफ प्रॉफिट होना, मतलब अगर कंपनी जितना कमा रहा है महीने साल में, उसका जो 1/10 है वो आपको मिलेगा पूरा साल भर का सीटी में। दैट्स द थिंग। अगर आप कंपनी को सपोज कितना है, वेट जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर लगाते हैं। 1/10 मतलब सपोज 3 लाख का सैलरी है सीटीसी, राइट। 100,000 10,000 लाख 10 लाख इंटू 10, मतलब अगर आप 30 लाख का प्रॉफिट दे रहे हो पर मंथ टू अ कंपनी, तो जाके कंपनी आपको 3 लाख का सीटीसी देगा। ठीक है, ऐसा चलता है, ऐसे दुनिया चलता है और ऐसे बिजनेस चलते हैं। तो अगर एसडी को जो 1 करोड़ का जो पैकेज मिलता है, अगर वो कंपनी को मोर देन 100 करोड़ पर मंथ का प्रॉफिट दे पा रहा है, देन ओनली कंपनी विल पे हिम 1 करोड़ का साल का सैलरी। दैट्स इट, दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज हाउ बिजनेस वर्क। इसलिए बिजनेसमैन देखना हमेशा ज़्यादा कमाता है जो टॉप में बैठा रहता है, उसके नीचे ठीक है कमाते हैं, बट नॉट एज मच एज जो बिजनेस वाला कमाता है, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन।
या वे वन लाइव चैट। मेरे दोस्त का एक भाई है, वो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिस्ट में। वो एक महीने का 6.5, हाँ 15 साल में, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। लेकिन आप एसडी में देख लो, एसडी का अगर, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में ही, लाइक अराउंड कितना, 1 साल ही एक्सपीरियंस में वो 70 lakhs कमा रहा है। मे बी नेक्स्ट ईयर 1 CR के ऊपर जाए। तो एस डी इज अर्न अ लॉट भाई। उनका लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। और ये सही है, 15 साल के बाद ही एक डेटा एनालिस्ट अगर कॉरपोरेट में है तो 6.5 पर मंथ कमाएगा। दैट्स ओके, दैट्स गुड, गुड थिंग। लेट मी टेल यू, अगर फ्रीलांस में तो अगर उसे क्लाइंट सही मिल रहा है, सही पे आउट दे रहा है, तो इजीली उस लेवल पे टच कर जाएगा 1 या 2 साल के अंदर। सो हाय प्रांशु, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Hi Pranshu, welcome to live stream. So like bro, need help. I have 3 years of experience in different tech, but need to switch to data analytics. Like, can you say me like in which technical field you have experience? Like, I can help you out in that. Correct? You can, if you can specify, I can help you out properly, right? So if you don't mind, if you can specify your work ex, so it will be helpful for me to help you out. Any doubt? Any doubt anybody have? Ask me in the live stream. I'm ready to help you out. And Pranshu, like, can you give me like what uh, technical field you have knowledge? I can help you out in that. Okay, like Pranshu has written in EPR software. I am not interested in EPR software. I am having 3.5 year of work. See, EPR software, that means you might be having understanding of like business process and reporting kind of things, right? As far as I know, as far as I have seen in my corporate sector, not in Amazon, but in previous one in Flipkart where I was working. There I have some of my colleagues who are in this EPR kind of department. So I know that they are mostly dealing into business process and reporting needs. So no need to worry. See, in data analytics, uh, you have to find out insights, and also you have to connect to maybe the clients or the stakeholder and make them understand the business requirement and reporting kinds of thing from the table that you have find out, or from the, I would say, insights that you have found out from the different data sets. So no worry, you are already having some experience related to this. I mean, you can connect those experience to this. No need to worry about. And let me tell you one thing, it is easier for you to switch to data analytics. Don't worry about that. Why easier? Because you already have the skills, business process understanding and reporting understanding, right? So no need to worry about tools. What tools you, maybe you might be using Excel a lot. Let me tell you, you might be using Excel, and you have to learn two things, two more tools, that is SQL and Python. Python, what things? Pandas and NumPy. That's the main thing. And SQL, what related to Windows function, CTA subqueries, as well as this joins and group by, this kind of things you will learn. You will automatically learn when you jump into SQL. So these two tools, you have to have a hands-on grip on that, right? And let me tell you one thing, once you are done with this, take some project from your work right? Maybe related to anything you have worked, related to
sales kind of thing. I think you have worked in that sales kind of thing where sales analysis will be there. Analysis, not proper hardcore sales analysis kind of things will be there. So in that thing, I know what I have seen. I'm saying like EPR like data sets would be used. You can do one thing, whatever you have learned from SQL and Python, you can use those concepts for a hands-on practice on EPR like data sets, right? You can use that, get a hands-on practice on it as well. Like when you will do this after getting good grip on SQL and Python, right? After this second step, that is I have told you EPR like data set, you take all this data sets from your workx, you work in that data sets, just make sure your mind open up, and as well as you build logic from your workx itself, it will be good. After this move to project, right? Why I am saying in project what will happen, whatever things you have learned uh, in SQL or Python, all those concepts you might have learned on a singular basis. I mean, concept by concept you have learned. But in project, what will happen, all the concepts that you have learned will be used on a single project at the same time, right? Maybe at a same query. Also, different kind of concepts will be used in that same query. So in this thing, what will happen, you will be able to think like a data analyst, right? Once you're able to think like a data analyst, automatically you will create a good logic build-up with the data sets. So from there you will get confidence on, and also in your resume or CV, mainly CV, your projects will get added up with your experience, right? So this is a good move, and this is a smart move, I would say. And once you are done with project, like done with project in the sense, once you are done with 5 to 10 projects, make sure you showcase the project in your LinkedIn with LinkedIn post, and in that LinkedIn post make sure you write all those you should mention two things. First, problem statement. Problem statement related, like what problem or hurdles you have faced when you are working on a EPR like data sets like that, and what was your approach to that problem statement, what was logic you have used, what tools you have used. Sometimes it will happen like in some scenarios, let me tell you, in real world, like you will be thinking, acha, this logic A would be used to find out the data, and when you use logic A, you will find out that no, I have not received that data what I was thinking. I should I should switch to logic B. So like that kind of thing you have to write in solutions. I mean, problem statement ka solution. You will have to write that in this thing, and also make sure you use proper hashtags, like I mean keyword hashtags, like SQL, Python, data analyst. What will happen, all those recruiters or uh, freelance client, they also search for candidate or freelance gig from LinkedIn or Reddit with this hashtags only, because see, they don't know who is Pranshu, and Pranshu, you also don't know who are the recruiters. So how they will search, like how you all will search each and everyone? Obviously there should be any common word or common keywords, like as I've told you, hashtag SQL, hashtag Python, hashtag data analyst. So in this way, what will happen, the clients or the recruiters, they will come to know about you, about your project. They will read it, and they will see ki, okay, this is what our requirement is, and this is what Pranshu is having skill set and work on this project as well. So in that way they will be able to connect you. This is the first thing, or first plus point of uploading your project in online field. Second plus point, let me tell you, there would be lots and lots of people like you who are maybe in EPR field, EPR software, like EPR department, like you told, or maybe in some other department, and they want to switch to data analytics. They might be having 2 year, 3 year, 4 year of work ex. In this way, what will happen, they will also be able to connect with you. They will see like, yeah, this is also a candidate who is trying to
switch their department to data analytics. Let's connect with them. Let's share our project. In this way, what will happen? Your connection will build up with that proper set of group. Proper set of group means proper set of data analytics group, right? In this way, what will happen? You can share your project, they will share you your project. So they will share your, I mean, they will also share the logic they have used in the project. Same thing you will also do. Once this kind of group will create, or this kind of connection will create, what will happen, any of them, if they get into data analytics job role or a job offer, obviously they will give first reference to you all only, right? So in this way, you will be able to build up a good connections in data analytics field. Or suppose anyone working in a data analytics field, they can also give you a reference, right? So as well as recruiter will able to also search you in the online world, right? So that's the thing. So in this way, you can move to data analytics field. And let me tell you one thing, in today's world, networking and showcasing your project is what P0 means first priority kind of thing. If you want, if you are having a different department and want to move to data analytics, right? So do this, because this is what I have done. This is what I have done and seen success in my data analytics field. So that's what I tell to my viewers and subscribers as well. So it had worked for me, it will also work for you. That's true. So please carry on with this process. And still any doubt, I am ready to help you out. I have my mail ID as well. If your doubt is like descriptive or huge, because there is a limitation of words or letters in live chat, so you won't be able to write all the requirements. You can mail me in my mail ID. And also, like, sometime what will happen, you will be practicing any queries or writing commands and you find a error. And sometimes what will happen, it will be tough for you to figure out like what the error is all about. You can take a screenshot and send this to me in my mail ID. I will be able to help you out, right? So main thing is networking and applying smartly. Networking, how it will happen? Via project and showcasing your project, right? Doesn't matter your project is kind of fresher kind of thing or something, doesn't matter in that. Just showcase your project in online world. People will connect to you, and make sure you use the proper hashtag kind of words, keywords. Because like in Instagram we use na ki hashtag trend, or in YouTube hashtag trending, like this. Same thing for your project, you use hashtag data analyst, hashtag SQL, hashtag Python. People will connect to you through your project, and that will be a positive thing. So that's what I have for you, Pranshu. Still any doubt, you can ask me out in the live chat, right? Any more doubts, any more queries? I'm ready to help you out. Okay, you have one message for me. Like enterprise resource planning quad EPR software. So I think this will be having a like of large transactional data sets kind of thing. So you can take those data sets and use your SQL queries in that. It will be good. Yeah, you can use that. And no need to worry. You can also say in different companies, like any company you will switch, you can say like, yeah, this transactional data sets I used to fetch using SQL, using Python. So at least the interviewer doesn't know what you have actually worked on the previous company. If you say them, I have used SQL to fetch the data set, I used to extract all those like reports and all that from SQL. I have built those KPIs using SQL, Python. No need to worry, because they don't know how you have extracted the data set, large data set. If you tell them via SQL, I used to do it, yeah, it's good to go. They will ask you question, and I know you will be able to answer that questions as well. So no need to worry about. You have good work ex of 3.5 years. Make sure you tailor that work ex in a data analytics kind of thing.
Go with the data analytics kind of thing, tailor your workx in that way, and doesn't matter, no need to worry. If you tell the, I would say, recruiter like use SQL to fetch all these things, they will obviously believe in you, but they will ask you question related to that, and I know you will be able to answer that, right? प्रांशु have one more live chat like SQL में लॉजिक लगाने में इशू आ रहा है, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ 70-80 क्वेरीज ऑफ एडवांस लेवल. लॉजिक लगाने में इशू आ रहा है, देन practice sets you can watch my or what we say that project. The thing is, I am new to YouTube right now. Yeah, I will make videos on this one step at a time. Right now, related to logic build-up, what you have told, you can go and watch my SQL project playlist that I have uploaded this week only. So you can go and watch that. There I will, like, I explain like what kind of logic I have used and what was my client requirement. Like, it is end-to-end kind of project. There we have data cleaning, data modification. So in that way, I have used what kind of logic will be used for data cleaning, what kind of logic we will be use where phone number and email both are null, what kind of logic we will use where phone number is null but email is there. We will use different logic in this, right? So I have applied some logic and it is a fresher kind of I would say project, so you will be easily able to connect it. And yeah, that's it. You can let me just share you my just a minute, my SQL project, and in that way you can also connect to this related to logic building. You can check out my project. In that, in this I have told like what kind of logic to be used related to the freelance client requirement. So you can check that out, right? And any doubts you have, you can ask me in the live stream or in the comment section as well. I will help you out in this. Logic buildup is used, you can check out in my video, right? And related to this 70-80 queries of advanced level, yeah, it will be done, but as you know, I am new to YouTube. I will make sure I will make that projects. I will surely make those project. This is in the pipeline, but it will take some time, right? So no worries for that. I will do it, right? We have one live chat from Pranshu. Like, I will definitely follow on the all the steps which you have suggested by you. Yeah, sure, sure. Why not? Why not? Thank you, bro. Like, first time I am आपके channel पे. Thank you for solving my doubts and queries and also guiding me. No worries, doubt. I am here to solve each and every one doubts. So no worry for that. I do live stream each and every day. You can ask me doubt anytime. You know my mail ID is there in the pinned comment, so you can ask me doubts in like through mail as well. No need to worry. I am there to help each and everyone. So just ask your doubts and please don't hesitate to ask doubts. Why I'm saying, if you keep the doubt with yourself, so
and that same kind of question or logic that you have doubt comes in interview, it will create a problem, let me tell you. So it is better to do a lot of mistakes, to get lots and lots of doubt during your practice session and clear that out. I would say better to do mistakes and have doubts previously rather than having mistakes and creating doubts or having doubts during interviews, right? So, welcome, brother. Thank you for believing in me, and we are here to help you out. So, thanks. Anytime, any doubts, I'm here to help you out, right? Any doubts you have. So, we have one message from Pranshu. Will definitely help you to grow your new channel. It will be great pleasure for me also to be part. Yeah, sure, sure. Please, please, please. Thank you, thank you for that. And I know we will grow because I know I am here to help you out. So we are doing a good and a positive thing, and good things take time to grow. I know we will definitely grow, but it will take time, one step at a time. It will happen. We might be reaching to a new heights. And let me tell you, I am here to help each and everyone in live stream. I know there might be channels out there in YouTube, means they might be clearing doubts in live stream, but I don't know, there might be channels, but let me tell you, I want to be one of that guy who is there to help each and everyone. So that's my motive. So that's it. That's and thank you for joining my YouTube live stream and asking me doubts. Thank you, brother. Thank you. And anybody, any doubts uh, in my live stream, I'm ready to help you out. Okay. Hi, Anirudh. Hi, Anirudha. Sorry. Sorry for spelling your name wrong. I'm very bad at spelling the names. I'm very sorry for that. So, hi, Anirudha. Welcome to live stream. Welcome to live stream. So we have one live chat from Anirudha. Like, I have question. Is it better to pre-process the data by using Python, or we can do it better using Excel? Yeah, good question. See, the thing is depends on the data, right? If the data is small and your Excel can take up the data without your Excel being crashed, it is okay to do data cleaning, modification, or work in that data set, right? If suppose what in my experience, like in Amazon where I was working in a corporate sector earlier. I left at March this year only. In Amazon, we have data sets where there are lots and lots of rows, like more than a lakh kind of rows. Like in that scenario, when we even though if you write select everything from table name and press enter or extract the data, it takes around 1 minute to 1 minute 30 seconds to load the full data sets in front of you. So if the data set is huge, Excel will crash, definitely it will crash. That's the only reason we have SQL and Python. So yeah, your question is correct. If the data set is small, around 1000 to 5000 rows, it is okay to do cleaning and pre-processing data using Excel. But if your data is huge, larger data set, more than 20K kind of thing, just explaining more, and columns will be there and rows will be there for huge companies, because each and every data in today's world is pre-processed. If you leave all the startups, if you see all the mid-level and higher level MNCs, they mostly use a database where people used to work in SQL and Python. So
That means there is a larger data set, and for that, yeah, we need SQL or Python for pre-processing the data or cleaning the data or working on that data set. And like you're talking about Python, let me tell you one thing. Let me tell you one scenario. I used to get data set each and every day from my stakeholder, and that raw data, you know what they have? They have the date format in a not proper way. I mean to say, not in a default way, no, not set in a default manner, that date wala column, right? So in that, what we used to do in SQL, automation is not there. What we used to do, we used to write queries, same queries each and every day for each data set, new data set that we used to receive every day. So what we used to do, we moved to Python, set a automation command. When we used to get the data, just give that data link into that automation. That's it. That's it. No need to write command each and every day, because we know the raw data that we will get each and every day will have the date format not in a proper way, not in a default kind of way, where SQL, like SQL have a default way of year, month and date, like YYYY dash MM dash DD, right? So in this way, what will happen, rather than writing those queries, those command every day, we used to automate using Python. So that is one of the use I am saying. There are lots and lots of use of Python and automation. So this is just one thing, so that you can connect to me, like you can connect my mindset, like why these things are used, tools like SQL and Python. So yeah, in one liner, if I say, if your data set is small, good to go with Excel. If your data set is large, then Python or SQL, because Excel will actually crash if you load Excel data having more than mm, a lakh rows. It will crash. Doesn't matter if it's MacBook or any huge processor. It will definitely crash, right? Yeah, we have live chat from Pranshu. Like, bro, can you please give a small introduction of yourself? Actually, I'm a new subscriber, so I don't know who actually you. Content is very good. See, let me tell you one thing. I am Shubham. Actually, my name is Shubham, and you can connect me in my LinkedIn ID as well. I have my LinkedIn ID. Let me first give you that. Mm, LinkedIn ID. Yeah, that's my LinkedIn ID. And related to like who am I? I am a freelance data analyst who is working for a Vietnam client. This is my latest introduction. If you ask me related to my past introduction,
I have 5 year and 5 months of work ex in data analytics plus supply chain and logistics department. Means in that department I have worked as a data analyst. First company, see, okay, I have done BTech in mechanical 2013-17 batch, and after that got a job offer from Hindalco in a third party company, not direct Hindalco, third party company who works for Hindalco. There I have worked as a inventory specialist in their warehouse, where I got to introduce to data analytics. The 80% was what I work for, 80% was related to inventory, related to supply chain and management logistics, and 20% work was related to data analytics. So from there only, from this first company, I have developed my interest, my curiosity in data analytics field. So what I used to do in that 20% work, if I tell you that, uh, what I used to do, I used to just fetch data from that data set, compare the data on a daily basis, weekly basis, monthly basis, like this kind of thing. So very less amount of SQL queries we have to write. We used to just check the data. That's it. That's it. From there, I have developed my interest in data analytics field. So there I have worked for 1 year and 6 months. Also done some projects in SQL using Python like Pandas and NumPy. Developed myself and started searching for freelance client. Right. I've got my first freelance client from like 2017-18 wala year, right? And after that, done my MBA 1921 batch, Corona batch, if you say. And after that, you know, job placement was on a negative graph at that time. So at that time also, with having experience, it was tough for me to get a job offer in data analytics field. But due to God grace, I got a job offer from Flipkart, that too from inventory and return center as a data analyst, right? Data analyst work was there, and 60% of work was related to SQL and Python, not much, but SQL was there. Python I used to use from my personal laptop just to make sure the data I am fetching from SQL is correct. That's it. Just for my satisfaction. So from there I have received a lot. I've got a lots and lots of experience, and side by side I have worked with many freelance client. I have worked with total 8 freelance client, like 8 I am working right now in the present work for a Vietnam client. 7 I have already done and dusted, good work, as well as, I mean, yeah, I have good connections in that, if you say. And after working 1 year in Flipkart, I have moved to Amazon. That is from कितना 2022 June में I moved to Amazon, right? Amazon Bangalore, then Hyderabad. There I worked in a department related to analytics department, where I have to work for warehouses that are in Luxembourg. So there I have used data analytics, mainly SQL a lot. A lot of SQL has been used there. I have gained a lots and lots of experience in SQL there, and from 2022 to 2025 March, I have worked for Amazon. March I left Amazon. Why I left Amazon? Because I want to follow my passion, that is teaching. So, and this can be only done if I leave my corporate job, because it was really hectic for me to manage both. So that's why the and one more thing, like I was having a good grip in freelance client, working for freelance clients. So right now I am working for freelance client as well as helping everyone through YouTube, clearing doubts related to SQL or related to career advice, related to anything, data analytics, anything you need, I can help you out. So that's my introduction about it. And I have my LinkedIn ID as well. You can go.
and also check out like any certification, anything whatever I have done. So that's all about me. Not much experience in data analytics. Yeah, 5 year and 5 months kind of experience in data analytics. But if you ask me in freelance work for data analytics, yes, I would say 8 clients I have worked with, and they were good clients. All were foreign clients, or well, all clients were very good. I have learned lots and lots of new things from those clients. So yeah, that's all about me. That's all about me. Oh, Pranshu, yeah, very inspiring journey. Yeah, thank you, brother. Thank you. Mm, And any more doubts? Anybody have any doubts? Just ask your doubts. Ask your doubts. Any doubts related to SQL, related to Python for data analytics? I am ready to help you out. Hey, hi Ajit. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Bro, I'm doing a course of data analytics from an IIT. Nice, nice. Till now, I had completed till Python. Yeah, that's good. That's good. So make sure you use all the concepts that you have learned in Python in doing some projects, right? So that what will happen, all those concepts that you have learned, you will be able to know where those concepts are actually used, like how those concepts are used by a data analyst. Make sure you do projects, because in projects I know you will be getting lots and lots of hurdles, lots and lots of, I would say, issues using that concept. So from there only you will open up your mind, you will be able to open up your logic building muscle memory, right? So make sure you do lots and lots of project using those concepts that you have learned in your data analytics course. So do it. Hmm. Yeah, I have one message from Anirudh. I am using Cursor ID. Yeah, right, that's an AI, right? Cursor ID. It automatically fixes bugs through prompting. Nice, nice. Yeah, that's the use of AI, right? Which reduces the time frame for completing tasks. How will this affect my coding skill? No, it won't affect your coding skill, but let me tell you, once you get to know the logic that Cursor AI or ID had given you, make sure you uh, learn that concept from yourself. Means, let me tell you one thing, what I used to do in 2023. Sometimes what happened, like, Python, it's an open source, so lots and lots of new things used to get updated maybe in a month or a 2 month kind of thing. So to learn that thing, I also used all those AI, mainly this Gemini AI I used to use a lot because of the user interface. That's why all AI are almost same related if you see for coding background. But let me tell you one thing, once I copy those codes and paste it, after pasting, the main thing starts. What is the main thing? I used to learn
that code, I used to build up logic, and without seeing that, I used to write that code again. Why I'm saying? So that, do you know what this copy pasting thing, what I used to get, I used to see I am very much dependent into Gemini AI. So what I used to do, I have decided, I have promised myself, once I paste this code somewhere, like code or query, either in Jupyter, either in my SQL dataset database, after pasting it, I will write the same kind of code or shorter form of code by myself, right? Why, because if I just do copy paste of code, like I'm saying for my side, what I used to do, if I do this copy paste of code from AI, I will be fully dependent on that. And let me tell you why company will pay me money, why a corporate company will pay anyone, any employee salary if they just copy paste and don't build up logic. Don't worry, just copy paste the code, but the main work start after you paste the code. What main work? You make sure you read that code again, make sure you paste that logic in your brain and write that logic once again, just after that, just after pasting the code. Once again, somewhere else or somewhere new tab, write it. Best part is make sure you use that logic to, like, if the code you have copied, like suppose the code is around 10 lines, make sure you write that code in such a way that it comes in 6 to 7 lines. Use your own logic. Why I'm saying, if you use your own logic, uh, it will be easy for brain to build up or grasp that, I would say, logic that you have copied from AI. It will be easy for brain to understand rather than copying, because see, brain is like, they want to get comfortable. And let me tell you, when the brain is in comfortable zone, you won't be able to learn anything. That what I have seen in my experience. Until and unless you don't use your brain, until and unless you don't use your brain to build logic, whatever code you have pasted, it won't be useful. So it is better, no need to worry, use AI for betterment of yourself to learn, but make sure you also give some effort from your side, right? uh, why? Because let me tell you, the code that you have pasted, you should know the reason behind it, why you have pasted that code, why Gemini has given you that code, what Gemini has used that logic, right? I mean to say, redo the same task again after pasting that code. Redo the same task, right? That's it. So that you will not lose that, what we say, logic wala flow. If you lose that logic ka flow, your brain will be comfortable in taking that code from any AI and pasting it, rather than staying out of comfortable zone and building up your own logic, right? So that what I used to do, and that what helped me as well. So that's it. And Aniruddha, like, by the way, thanks for the first answer. Yeah, welcome, bro. Ajit, like, yes, bro, I'm doing the project. Thanks, brother. Yeah, good. You have to do the projects, brother, because if you don't do the projects, like, how will you know where those concepts will be used? Because see, let me tell you one thing. Uh, we know why we learn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why we learn 1 to 100. But until and unless we don't use table like 1 into 2, 2 into 2 equal to 4, then it will be like, we will be thinking now, why we have learned these numbers from 1 to 100, like that I'm saying. Until and unless you don't use that concept somewhere meaningful, it won't be useful, right? So that's a good thing, you are doing projects. Go for it. Go for it. Do more projects, do more mistakes, learn from that, and yeah, you will get success. No need to worry about. We have one message from Ajit as well. Yes, bro, I am also, just a minute.
Yes, bro. I am also doing the same that to depend upon AI, but the way you taught that how to handle it, now I am going to do the same. Yeah, this is what I used to do because I have seen like just copy and pasting the code makes me very comfortable to just get the answer. But if I do not redo the same thing, if I do not know why I am using this logic behind this code, and there is no use for me to work for that company, right? Or work for that client. So that's the thing. Yeah, we have one live chat from Anirudh. You mean to say optimize the code by uh, code over one whenever you will get through that AI. It is better if you can optimize it. It is very much good if you can optimize it. But let me tell you, if see if the code is already logic set kind of thing, matlab Gemini or Cursor AI has given you already that kind of code where you have reached the end of the logic, I would say no need to optimize it from your own way, but make sure you redo that same code again from your side. Why I'm saying, because you should also know why Gemini has given or why ID or Cursor AI has given that code. What was the logic behind that code? Why I'm writing that code? Like, you should know. If you know these things, if your brain knows these things, I mean to say, in future when you work, that same kind of scenario comes again in front of you, you will be able, or your brain will be able to open up ki yeah, this kind of things we have done earlier. So right now no need to go to AI and we can write those things, right? So that's it. Slight optimization is okay if you can do, that's a good thing. But let me tell you one thing, make sure you use AI as your coach, right? As a friend, use AI as your friend or a coach, like to get speed or skill build up. Don't use AI as your what we say copy paste kind of thing. Use AI as your as your sorry friend or coach. It is better to do that, right? And that's it. That's it. Any more doubt anybody have? I'm ready to help you out. Any doubts? Okay, we have received 11 votes in this quiz. That's a good thing, and lots of people have given right answer as well. Uh, so the right answer, let me write this, and 81% have given the correct answer for this. Correct answer shows statistical summary. Correct answer. So should I give a new question related to? Okay, this is a very simple question. Let's see how many of you can give a right answer for that. This is a basic question for pandas. I mean, uh, Python for data analytics pandas. And let's see how many of you give the right answer. This is a basic question. Is it zero? Is it one? Okay. So what is the default index start in pandas? Is it zero? Is it one? Or is it minus one? I have started the live quiz. Please do answer in the live chat, in the live stream. Yeah, we have one live chat from Ajit. Like, I am writing code on Google Colab. Is it okay or should I start with Jupyter? No, see, both are same thing. Yeah, only Google Colab needs internet connection. Jupyter do not like, you can work offline in Jupyter. That's it. Depends on your need. If you want to move to Jupyter, it's okay. If you want to stay in Google Colab, that's also good. So Google Colab, it is easy to share via link. Any notebook, is it easy to share the notebook via links?
So anything related, it depends on your requirement. No need to worry about. Collab is fine. You can work on that, right? And yeah, but yeah, internet connection is required. That's a different thing. In today's world, we have internet each and everywhere in our surrounding, thanks to Geo, Airtel, whatever company is there. For the private companies, thanks to Geo, Airtel for providing internet. But it depends on your need. You can work in Google Colab or you can work in Jupyter, your wish. Both are good. Both are good. Both are good platform to work on. So that's it. That's it. Or I would say wherever you are comfortable to work on, it is good, right? So any doubt? Any doubt anybody have in this live stream? They can ask me doubts in my live stream. Just ask your doubts. And please do watch my SQL project that I have uploaded in this week. Please go watch that project and please do give your valuable feedback. Sorry, let me write this. I have given the wrong one. This one. Yeah, this one is the project. So please do, and it is in a playlist form. So all the what we say concept as well as the project are available in the playlist, and it's a small project like 2 hour 25 minutes, like 2 hour 30 minutes kind of project. So what we have in that, if you ask me, it is all about data cleaning, data modification, data manipulation, date format change, each and everything. Even though data analysis consists of storytelling and communication, right? So we have email communication with client in this project, like how client ask for requirement to a freelance data analyst, and how freelance data analyst connect to client via mail to. So the thing is, you can go and see actually what goes behind the scene of an freelance data analyst. So just go give it a watch, and please give your valuable feedback as well, because that's very much necessary for me, as each and every month I will be uploading project. Like this month I have uploaded project for SQL, in SQL background. Next month it will be for Python. So just I need each and every one valuable feedback for that, and stay tuned for new projects each and every month. It will be interesting. It will be having a learning curve. So please do watch my project in my YouTube channel, right? And also give your valuable feedback. That's most necessary thing. Hmm, any doubts? Just a minute. It's coming in 1 minute. Just a minute.
So I am back again in my live stream. So ask your doubts. So we have one live chat from Ajit. Like, bro, I don't understand the concept of capping outlier in Python. Can you please explain? Yeah, right. Let me give you an example related to marking scheme, like marks. Marks in the sense, suppose, imagine you have a maths ka test score, like maths ka score, where there will be like numbers like 50, 60, 70, 95 and 500. So in this list what you have, 500 is too high compared to others, right? So it's an outlier. Capping outlier mein it's an outlier. And if we cap the scores above 100, the list become what kind of thing? 50, 60, 70, 80 and 100. So in this way, what will happen, we do not remove the outlier, we just replace it with the allowed minimum. So it does not spoil the average of the chart, right? If 500 would be there in that list, average would come different. But we know 500 is too high, and we set the cap till 100, maximum cap till 100. So in this way, the average will also come on a, I would say, meaningful way. So what will be the end result? We do not remove the outlier, we just replace it with the maximum, so it does not spoil the average. That's it. That's just an example what I can tell here to explain you by using marks or using test scores like that, right? And if you ask me one liner,
like one liner kind of thing. I would say capping outlier means setting a number like maximum or minimum number of for your data, so that कि जो extreme value है वो does not what we say does not ruin the result, ruin the additional result. Like if 500 would be there in the list of test score, like 50, 60, 70, 80 and 500, in that average, if you find out, it will be like this 5, for that 500 your average will be ruined, like. And if you set the maximum value 500 to 100, simple, 500 को हटा के if you write that 100, what will happen, that for that extreme value, your I mean say average result, suppose you are finding an average, your average result will not get ruined, right? So this is the thing, means setting or modifying, it is better to say modifying your maximum limit or minimum limit of your data, so that your extreme value do not get ruined in the result. Suppose in that same list only, if you say 50, 60, 70, 80 and 0 will be there. So rather than writing 0, you can change the minimum limit to suppose 10, like that, because it will not ruin your average if you want to find the average or anything, or you want to find the uh, standard deviation if you go into statistics field. Mean means same, average mean का मतलब वही average ही होता है. तो that's the thing or for capping outlier in Python. I hope you understand it. If you need any more example, you can ask me, I can help you out. And why I have used test score, because you can connect it easily, that's why I'm saying. So we have only 4 votes in this live quiz. Like, what is the default index start in Pandas? Is it 0, 1, -1? Yeah, we have one chat, live chat from Ajit. Like, yeah, bro, understood. Yeah, yeah, that's thank you, bro. Thank you. That's why I used a small example so that it is easy for you to understand. Because if I say, I would say a definition, it will be tough for you to understand. It will be tough for anyone to understand. Like if I would be in your place and you have given me just an definition, yeah, I know it will be tough for me to understand. So my motive is to give a small example so that it is easier for you to get connected to me through that example, right? So that's all about it. And any more doubts, anytime, any doubts you have, you can ask me. I have my mail ID as well. You can ask me in through my mail if your doubt is having a description, like related to, if you want to describe your doubt, because as we know, in live chat there is a limitation related to what we say, words and letters. So that's why you can ask me in the mail ID as well, anywhere you are comfortable with, right? A hi solo reflex, welcome to live stream. Welcome to live stream. STRAAM. Welcome to live stream. Any doubt you have, anything related to SQL, Python, DA, just ask. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Yeah, we have one message from Solo Reflex. आपको पीपी स्ट्रक्चर V3 पता है क्या, क्या है? पीपी स्ट्रक्चर मतलब क्या, आप सैप का पूछ रहे हो क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में? पीपी इज दैट, मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, आप एक बार बोलोगे तो आई कैन हेल्प यू आउट, राइट? क्योंकि सैप में पीपी है, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट? तो आई थिंक यू आर आस्किंग दैट, क्या?
लाइक इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑल अबाउट, किस फील्ड में है, तो आई कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज रिलेटेड टू पीपी आई नो सैप पीपी करके एक है जिसको प्रोडक्शन प्लानिंग बोलते हैं। जैसे मैंने सैप डब्ल्यू एम किया हुआ है, एम किया हुआ है, मतलब यूज़ किया हुआ है इन माई वर्क एक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट। वैसे सैप का पीपी होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। आप वो पूछ रहे हो क्या, या फिर अगर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, राइट? एनीथिंग, एनीथिंग, एनी डाउट्स? एंड सोलो रिफ्लेक्स, आप मेरे को कॉन्टेक्स्ट बोलो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, राइट? पडल पडल स्ट्रक्चर V3 फॉर स्कैन PDF एक्सट्रैक्ट? ना भाई, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है ब्रो। पडल पडल स्ट्रक्चर, नो, नो आइडिया। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है लाइक क्या होता है। मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना, डेटा एनालिटिक्स में मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, पीपी बस सैप पीपी के बारे में मालूम था, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप सैप पीपी के बारे में पूछ रहे हो, बट पडल पडल, आई एम वेरी सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ, राइट? तो इसके बारे में मेरे को फ़िलहाल के लिए तो कुछ नॉलेज नहीं है। बट क्या आप बोल सकते हो लाइक ये कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है? बिकॉज मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए, तो अगर आप बोल सकते हो कि ये कहाँ यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, तो आई विल बी ऑल्सो एबल टू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट एज वेल। एनी डाउट्स? सोलो रिफ्लेक्स, वी हैव वन मैसेज फॉर दैट, लाइक ये स्कैन पीडीएफ के लिए यूज़ होता है, बट ये डेटा एक्सट्रैक्ट किस एक्यूरेसी के साथ करता है वो पता नहीं है। सॉरी भाई, मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे ये पडल पडल स्ट्रक्चर। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट या मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा, देखूंगा नेट में कि ये है क्या, क्योंकि इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू दैट बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो आई विल सर्च एंड सी कि ये एक्चुअली है क्या, बट थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल फीडबैक। आपने जैसे बोला कि ये स्कैन पीडीएफ के लिए यूज़ होता है, बट ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, तो इतना मुझे आइडिया आया, थैंक यू फॉर दैट। और इंटरेस्टिंग है, आई विल ऑल्सो सर्च कि ये है क्या एक्चुअली, कहाँ यूज़ होता है। आई थिंक पाइथन में यूज़ होता होगा, मेरे को जो लग रहा है। आई थिंक सो, आई थिंक सो। तो देखते हैं, मैं भी एक बार देखूंगा, रिसर्च करूंगा क्या है क्या नहीं। सैटरडे संडे बैठता हूँ, देखता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि ऐसा भी कुछ होता है करके, राइट? वी विल हैव अ लुक इन दिस, एंड वी विल ऑल्सो, इफ अगर इंटरेस्टिंग है तो हम लोग प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, अभी वाला प्रोजेक्ट नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, राइट? ओ भाई, आह,
Okay. हाँ, सोलो रिफ्लेक्स वे वन मैसेज, अरे नहीं हम भी आपसे इंस्पायर होते हैं, थैंक यू लॉट्स फॉर योर, अरे ये ग्रुप इसीलिए ही है, ये लाइव स्ट्रीम उसीलिए ही है कि एक दूसरे से इंस्पायर हो, एक दूसरे से कुछ सीखें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये लाइव स्ट्रीम में अगर कोई भी आता है, मेरा एक ही मतलब रहता है कि लोग सीख के जाए यहाँ से कुछ। और एक चीज़ देख रहा हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस लाइव स्ट्रीम में, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सारे प्रोडक्टिव काइंड ऑफ है, और पढ़ाई का बात चलता है, काम का बात चलता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। थैंक्स टू यू ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स कि आप लोग शेयर करते हो रिलेटेड टू न्यू न्यू थिंग्स, नया टेक्नोलॉजीज या नया डाउट्स कुछ भी आता है। सो थैंक्स फॉर दैट एज वेल, रियली थैंक यू। आप लोग को थैंक यू फॉर दैट, राइट। एंड ये अच्छा चीज़ भी है, देखो यूट्यूब में टाइम वेस्ट भी होता है, टाइम प्रोडक्टिव भी रहता है। तो मेरा मेन मतलब है कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है, सबका टाइम वैल्यूएबल है। तो दैट्स अ गुड थिंग। सब अच्छे लोग आ रहे हैं, सब अच्छा डाउट्स पूछ रहे हैं, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं डाउट्स पूछ रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। और जो भी डाउट मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ उससे बाकी लोग भी कुछ सीख रहे हैं, मतलब मुझे लगता है बाकी लोग भी कुछ सीख रहे हैं और लोग खुश होके जा रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, थैंक्स टू यू फॉर दैट। आप लोग को थैंक यू फॉर दैट, राइट। एंड एनी डाउट्स, एनीथिंग डाउट्स, एनी न्यू थिंग्स टू नो, प्लीज़ इसमें शेयर कीजिए। मेरा मेल आईडी भी है, मेल आईडी में भी आप लोग शेयर कर सकते हो, राइट। ये क्या, and please do participate in live quiz. uh, easy question है, what's the question all about? What is the default index start in pandas? Is it zero? default वाला, default क्या जीरो से स्टार्ट होता है, क्या वन से स्टार्ट होता है, क्या माइनस वन से स्टार्ट होता है? इंडेक्स मतलब दिस, अगर आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, ये इंडेक्स है जिसके ऊपर कॉलम नेम नहीं होता है, वो इंडेक्स रहता है। और फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन रहता है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग, क्या जीरो से स्टार्ट होता है, क्या वन से स्टार्ट होता है? You might have got the answer, but still I want you all to participate in this live quiz, right? So please आप लोग participate करें। and कहाँ गया? ओके, here we have, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, डॉट स्ट्रिंग डॉट अप्लाई डी ए लैम्डा की जो x है वो x डॉट एस टी आर डॉट लोअर has no attribute string। क्यों भाई, प्लेयर्स वेट,
यस इसमें शॉर्ट नेम जो रहेगा, सीरीज तो है, सीरीज है, डी टाइप क्या है? यस ऑब्जेक्ट, string has no attribute. इसमें क्या हो रहा है इसमें यार? हाँ okay, we do not use string for this. okay nice, तो इसमें भी हमें string नहीं यूज करना है क्या? okay okay okay, we should not use string for this, but why? How pandas apply the string method?
Any doubts? Anybody have any doubts? Ask your doubts in the live stream, and please do participate in this live quiz. Please do participate in the live quiz. Participation in the live quiz. I need participation, guys. Doesn't matter the answer is wrong or right, but participation is what necessary to know what is the actual answer, or like where do we stand in our basic knowledge. So that's why I'm saying just participate in the live quiz. Yeah, hi Sambit. Welcome again, welcome back.
राइट। हाय संबित, वेलकम बैक अगेन टू माय लाइव स्ट्रीम। ओके, हाँ वी हैव टू लाइव चैट फ्रॉम संबित। लाइक मेरा 2 साल के बाद स्विच के लिए जब इंटरव्यू होगा उसमें मैं झूठ बोल दूंगा कि लाइक मेरे पास डीबी टेस्टिंग का नॉलेज है एंड डेटा का एंड मेरा रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स चीज़ कर रहा हूँ। ओके, इंटरव्यू तो बैकग्राउंड जाके नहीं देखेंगे ना, मीन्स ऑफिस में। ना ना भाई, नेवर नेवर नेवर, उतना किसी का टाइम नहीं है इंटरव्यू में। अगर आप देखो, नो डाउट फैब्रिकेट करके बोलते हो कि मैंने यूज़ किया हुआ है डेटा एनालिटिक्स सीक्वल पाइथन, गुड टू गो। और वो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पूछने का आप आंसर दे दोगे, यू आर गुड टू गो। बैकग्राउंड में क्या चेक होता है, लेट मी टेल यू। बैकग्राउंड में आपका सैलरी चेक होता है, आपके मैनेजर के पास जो मेल जाएगा, यू हैव टू गिव योर मैनेजर्स नेम और एक कोलीग नेम। जितना मैं देखा हूँ इन माय कॉर्पोरेट फील्ड, बैकग्राउंड चेक जब होता है, जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, BGV बोला जाता है उसको, जस्ट अ मिनट, BGV बोलते हैं। और ये एक थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी चेक करता है इसको। तो क्या रहता है बैकग्राउंड चेक में, क्या रहता है मालूम, उससे बस पूछा जाता है आपके मैनेजर के ऑफिशियल मेल आईडी से, कंपनी के मेल आईडी और आपके कोलीग का मेल आईडी जो आप दोगे, उससे ये मालूम चलता है कि क्या आपने 2 साल काम किया है, आपका सैलरी क्या था, दैट्स इट। और आप अच्छे एम्प्लॉय थे कि नहीं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्या काम कर रहे थे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमेशा एक थर्ड पार्टी करता है, कंपनी वाले कभी नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि अंदर घपला हो सकता है, इसीलिए थर्ड पार्टी को दिया जाता है। थर्ड पार्टी ये सब काम करता है, राइट। और वी हैव वन मोर चैट, लाइक ऐसा झूठ बोल के इंटरव्यू क्लियर हो सकता है? हाँ होता है भाई, होता है, क्लियर आउट होता है। इंटरव्यूअर को कुछ पता नहीं रहता आपने क्या काम किया, क्या क्या नहीं। आप जो बोलोगे वही वो कनेक्ट करेगा। आप जैसा अपने आप अपना वर्क एक्स को फैब्रिकेट करके बोलोगे, उसी हिसाब से वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ, अगर आंसर देने टाइम कहीं उसको लगा या कहीं आपने वैसा आंसर दिया जहाँ लगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है काइंड ऑफ, तो देर विल बी एन इशू। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग, ये सब प्रॉपर होना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, राइट। नो नीड टू वरी अबाउट। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बस 2-4 सवाल पूछता है कि कितना सैलरी था, 2 साल आपने सही में काम किया है कि नहीं। तीसरा चीज़ ये है कि आपका बिहेवियर कैसा था, दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो थर्ड पार्टी करता है तो थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है आप सीक्वल यू पोस्ट जीआरई सीक्वल यूज़ किए हो कि माई सीक्वल यूज़ किए हो कि क्या किए, उनसे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनसे उनको सैलरी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसीलिए वेरिफिकेशन होता है ना, कि सपोज आप बोल दो कि मेरा सैलरी 1 करोड़ था और अभी यहाँ पे वो लोग ज़्यादा दे देंगे, जस्ट सेइंग, जस्ट एन एग्जांपल। फैब्रिकेशन और मॉडिफिकेशन वहीं पे ही रहता है, तो इसके लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आता है, उसका अलग टीम है, थर्ड पार्टी रहता है, दे डू द वर्क। लेकिन इंटरव्यूअर के सामने अगर आप फैब्रिकेट कर पाए कि हाँ ये सब काम मैंने किया हुआ है थ्रू सीक्वल, थ्रू पाइथन, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। वो आपसे क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछेगा और आपने आंसर दे दिया, तो नो नीड टू वरी अबाउट, नो नीड टू वरी अबाउट। और सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप देखना ना, बहुत सारे न्यूज़ मिलता होगा आज के डेट में भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट के वो लोग रहते हैं, झूठ बोल बोल के कहीं और
अच्छा लेवल में बैठे होते हैं, क्योंकि उनका उन्होंने उस चीज़ को उतना स्टडी कर लिया है कि उनसे आप कुछ भी पूछो ए टू जेड वो बता देंगे, बेटर बताएंगे, लेट मी टेल यू। तो डिपेंड्स ऑन योर स्टडी, डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, डिपेंड्स ऑन आप उस चीज़ में कितना माहिर हो, वो फर्क पड़ता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज रिगरस स्टडी चाहिए, दैट्स इट। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इजी थिंग, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। नो नो, लेट मी टेल यू, कुछ डरने का बात नहीं, अभी है आपके पास टाइम है, 2 साल तक का टाइम है। जस्ट टेक योर टाइम, लर्न एवरीथिंग, एंड देन यू आर ओके विथ इट।
हेलो। या संबित लाइक क्वेश्चन मार्क रिलेटेड टू कौन सा वाला क्वेश्चन? लाइक कौन सा वाला क्वेश्चन का? आई थिंक मैं सबका आंसर दे दिया था, बट स्टिल इफ आई मिस्ड समवेयर, आप पूछ सकते हो वापस कौन सा वाला क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दिया था, राइट? यू कैन आस्क इन माय लाइव चैट अगेन, राइट? आई होप मैंने सबका आंसर दे दिया था, बट स्टिल इफ आई हैव मिस्ड समवेयर, आप मेरे को क्वेश्चन वापस से पेस्ट करके पूछ सकते हो लाइव चैट में, राइट? मार्क के ऊपर, अच्छा दिस वन, ओके ओके, दिस वन, इसमें मैं ये वाला देता हूँ, राइट? दिस, ये इमोजी, राइट? इमोजी का पूछ रहे हो ना रिप्लाई, तो ये इमोजी का रिप्लाई, राइट? आई थिंक आप क्वेश्चन का पूछ रहे थे, तो मैं वही डाउट में था। तो इमोजी का रिप्लाई इन इमोजी अगेन। Any more doubts? Any more doubts? So we have 8 votes, only 4 minutes left to 1 hour. So let's see in 4 minutes how many answers do we get? How many vote do we get? If we get 2 vote, I would be happy because 10 votes हो जाएंगे. And our previous quiz में more than 10 votes आए हैं सब में, तो if we can get 2 more votes in the quiz, I will be happy.
अच्छा भाई, आंसर पूछ रहे हो मार्क के ऊपर? अच्छा, ऐसा झूठ बोल के इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। मैं आंसर दे दिया था एक्चुअली। या यू कैन क्लियर, आई हैव टोल्ड यू ना, आप क्लियर कर सकते हो। बहुत लोग इंटरव्यू क्लियर भी करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो भी बोलोगे इंटरव्यूअर को कि ये सब मैंने यूज़ किया है, मेक श्योर उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए आपके पास, कि एक्चुअली आपने क्या क्या यूज़ किया है। क्योंकि इंटरव्यूअर तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा उस डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, ठीक है ना? तो उसको अगर आपको शोकेस करना है कि हाँ मैंने ये सब काम किया हुआ है, तो यू शुड बी हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन दैट डिपार्टमेंट। मतलब जैसे आप टेस्टर का काम कर रहे हो, तो टेस्टर विद डेटा एनालिटिक्स का अगर आप शोकेस करते हो अपने आप को या फिर अपने एक्सपीरियंस को। कौन सा मैसेज? हाँ नहीं, मैं दूसरे मैसेज दे रहा हूँ आपको, क्यों नहीं शो कर रहा? कौन सा मैसेज? लाइक फिर से आप पेस्ट कर सकते हो अगेन। फिलहाल के लिए तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के ऊपर वो इमोजी है, दैट्स इट। और कुछ है क्या? और तो मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, मतलब जितना मुझे यहाँ शो कर रहा है दैट्स इट, वही है। या तो आप मेल कर सकते हो, मेल आप वापस कर सकते हो, राइट? अच्छा हाँ भाई, मैं क्या बोल रहा था कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, ताकि उधर आप सबका क्वेश्चन का आंसर दे सको और हम उसको भेज सकें। व्हाट्सएप ग्रुप से बेटर टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, बट अभी नहीं। एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मैं डिस्कॉर्ड चैनल बनवा दूंगा, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर जो भी रहता है। तो उसमें क्या है, आप लोग अपना कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, और एक ही पूरा मैसेज सेंटर में रहेगा, तो इजी रहेगा, राइट? या टेलीग्राम में ही बनाऊंगा, बिकॉज टेलीग्राम में ज़्यादा लोग आ सकते हैं उसमें। बट एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए अभी, मैं आई कैन इजीली आंसर देम, है कि नहीं? एक बार 1000 हो जाए तो इजी रहेगा आंसर करने के लिए, करेक्ट?
Okay, we have 9 votes. One more vote. We will jump to a new question set.
ये भाई। Put that time. df dot players.
Any doubts? Anybody have any doubts? Ask your doubts in the live stream. I'm ready to help you out. Any doubts? Anything related to SQL, Python for data analytics? Ask your doubts. And as we have reached 12 votes, 1 hour also complete. Let's end the poll and start with a new question. So we have correct answer. The answer is 0, and 75% of them have given the correct answer. So let's have a new question for this. Hmm, what should we give? Okay, let's have something advanced level kind of question in this quiz, right? And I will be giving two options so that it will be easy for you to understand. Let's see how many of you gives the right answer for this. So which method is used to combine two data frame by columns? By columns, right? Make sure you think and then give your answer. It is confusing. Why? Because the option is confusing. So just think and give the correct answer, right? The thing is, you have to use your basics knowledge in this. So no need to rush. Think about the question. Just think what the question is asking you all about. And the main part of this question, if you ask me, it is about combining two data frames by columns. That's the main, I would say, to I mean, by columns is the only thing which will lead you to the correct answer. So make sure no need to rush and give the correct answer for this. And please do participate in this, right? Please do participate because participation is important rather than giving a correct or a wrong answer. So please do participate in this. And just a minute, let me just have a call and then just join again in the live stream. Just a minute.